Good morning, dear students. I hope you all are fine. So let us continue with our lesson that we had started, and that is light. So हमने देखा कि how we had seen about the incident ray, reflected ray, yes, and the laws of them. So let us move forward. So the next is dispersion of light. This is a phenomenon which we often see. Have you ever seen through scale? Scale होगी आपकी, न्यू स्केल होगी, उसके थ्रू कभी सन की तरफ देखा है थ्रू द स्केल? और थ्रू हैव यू सीन ऑन द सीडी, जो सीडी प्लेयर में चलती है, हैव यू सीन द 7 कलर्स? यस. सो दैट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट. तो व्हाट न्यूटन डिड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ही टुक अ प्रिज्म, and what he did, he allowed a white light, okay, a white light to pass through that prism. इस ट्रायंगुलर कलर का होता है, 3D structure, that is a prism, okay, it is transparent. So what he did, he allowed the white light to pass through the one side, as it is shown in the figure, through the one side of the prism, and what he could see कि opposite वो light, of course, क्योंकि वो transparent है तो light will pass through that और वो दूसरी side आएगा. And he kept a screen on the opposite side. एक side से अगर he is passing the light, white light, and on the opposite side he placed a screen. He could see 7 colors. White color के हो गए 7 colors. Why? How? So sunlight or white light, actually that is a mixture of 7 colors. The sunlight, which is actually white, although we don't see it exactly as a white, but वो white color होता है, and that is why any white color is actually a mixture of 7 colors. So prism बस क्या करेगा, उन 7 colors को separate करने का काम करता है. Okay, white color already had 7 colors, and what prism, the scale and the CD will do, it will just separate the white light into its constituent 7 colors. The colors of rainbow, right? Rainbow भी उसी की वजह से बनता है. So now how would we define dispersion? The splitting up of a sunlight or a white light into its colors is called the dispersion of light. So the white light is just splitting into 7 colors. Okay, 7 colors बस अलग अलग हो जाते हैं. That is the dispersion of light. So when we pass this through a glass prism, then we can see through a scale. On a disc you can see, या फिर rainbow, which is the 7 colored, that means Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So these 7 colors will make the white color. Okay, तो white color में कौन से colors होते हैं? The 7 colors in the rainbow. Okay, so that is what. So what we conclude, rainbow also is an effect of dispersion of light, right? White color जो है, तो वो colors कहाँ से आए nature में? From the sunlight. Sunlight is the ultimate source of energy to at least our solar system, right? To the earth placed. तो क्या है, सन का जो लाइट है विच इज वाइट, इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, एंड दैट जस्ट गेट्स स्प्लिट्स. ओके, दैट जस्ट स्प्लिट्स, द डिस्पर्शन ऑफ दैट विल अकर एंड वी सी द रेनबो फिनोमेना. रेनबो कैसे बनता है, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ योर्स. देन लेट अस सी द ह्यूमन आई. सो यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. व्हाट डू यू सी? सबसे बाहर का जो दिख रहा है, ओके, सबसे बाहर का कंजक्टिवा, दैट इज जस्ट द प्रोटेक्टिंग लेयर, और उसके जो अंदर है यू सी द कॉर्निया, राइट? कॉर्निया जो कंटिन्यू है पीछे तक, पूरे आईबॉल को कवर करती है. तो कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई. ओके, cornea is the outermost covering of the eye, which is transparent. Of course it should be transparent, तो ही तो light ray will go inside the eye, it will pass through it. So cornea, which is the transparent protective layer which surrounds the whole eyeball. You see eyeball, eye actually it is an eyeball which is spherical in shape, right? So cornea जो है वो पूरे इसको क्या करता है, cover करता है, right? Then which is transparent. Then if you go behind the cornea, you can see the iris. Iris जो है दोनों साइड से ऐसे वो overlap हुआ है, which are almost in the greenish color. Okay, in the cyan color you can see. So they both are the iris. They make the iris. आपने देखा होगा किसी के जो आईज होते हैं, दे आर वेरियसली कलर्ड. किसी के ब्राउन होंगे, किसी के लाइक ब्लू होंगे, किसी के थोड़े ग्रीनिश होंगे, किसी के टोटल ब्लैक. सो यू सी किसी के थोड़े भूरे. सो डिपेंड्स. सो आईज के कलर्स अलग अलग होते हैं. दीज कलर्स आर बिकॉज ऑफ आइरिस. ओके, आइरिस जो है वो अलग अलग कलर का होता है, एंड हेंस डिफरेंट
persons have got different colors of the eyes. So the color of eye is actually the color of iris. Okay, that is actually the color of iris. यहाँ पे बस दोनों साइड दिखाया है because this is a 2D structure. 3D देखोगे तो पूरा वो सराउंड करेगा आई बॉल को हर तरफ से. ओके, एंड आयरिस के अंदर जो क्या बोलेंगे गैप है. ओके, इन बिटवीन द आइरिस यू कैन सी एक गैप है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल. तो हमारे जो लाइक द आइरिस है उसके अंदर जो छोटा सा एक ब्लैक कलर का जो होता है ना डॉट, लाइक वेरी स्मॉल सर्कल, दैट इज एक्चुअली द प्यूपिल. प्यूपिल क्या है? प्यूपिल एक एपर्चर है. इट इज़ एन ओपनिंग विच विल अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट. और लाइट एक्चुअली कॉर्निया से तो अंदर जाएगा ही, लेकिन जो प्यूपिल है उसके थ्रू एक्चुअल में जितना ही प्यूपिल का एरिया है, जितना ही प्यूपिल का एपर्चर है, उसमें से ही लाइट पास होता है एंड देन इट विल गो इनसाइड द आईज एंड विल सी देन वेयर डज इट गो. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आई. सो वी हैड लर्न्ड अबाउट कॉर्निया, उसके बाद आइरिस एंड प्यूपिल. Then there is a lens. You can see oval like this. You have learned about the lenses. So ये है lens, which is a convex lens. You know concave and convex. So that is the convex lens as you can see. Okay. और वो जो convex lens है वो किसने held किए है? You can see that किसने hold किए है? That is held by the muscles which are present in our eyes. These muscles are the ciliary muscles. You can see these are the ciliary muscles जो black color से बताए हैं. ये जो लेंसेज है वो लेंसेज को पकड़ के कौन रखता है? द सीलियरी मसल्स. और क्योंकि मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड दे कैन रिलैक्स, तो वो क्या करेंगे? लेंस को आइदर कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट पास में है या दूर है, देन द ऑफ कोर्स द इमेज जो लाइट रे है उस ऑब्जेक्ट से इट विल गो थ्रू कॉर्निया, देन प्यूपिल, देन इट विल फॉल ऑन द लेंस. और लेंस क्या करेगा? उसकी इमेज फॉर्म करेगा, राइट? कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स द इमेज विच विल फॉल ऑन द रेटिना. पीछे देखो एकदम अपोजिट साइड. ओके, आई बॉल का अपोजिट साइड इस पे देयर यू कैन सी द रेटिना. रेटिना इज लाइक अ स्क्रीन है जहाँ पे इमेज फॉल होती है. ओके, रेटिना इज जस्ट अ स्क्रीन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड. फिर वहाँ पे इमेज बन गई. फिर रेटिना में कुछ नर्व्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं जो क्या करेंगे? दिस आर ऑप्टिक नर्व. कुछ नर्व सेल्स होंगे, दोज नर्व सेल्स विच विल देन लीड टू द ऑप्टिक नर्व जो जाएगी ब्रेन तक, एंड द ब्रेन विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग, व्हाट आर वी लुकिंग, हमारे सामने क्या ऑब्जेक्ट है, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड. सो दिस इज हाउ द आई वर्क. ओके, एंड यू सी द प्यूपिल जो है वो अपना एपर्चर कम ज़्यादा कर सकता है. जब बहुत लाइट होती है तो वो अपना एपर्चर कम करता है सो दैट कम से कम लाइट अंदर जाए एंड आवर आईज शुड नॉट गेट डैमेज. सो इट एडजस्ट इट्स एपर्चर. सो दिस ब्यूटिफुली आवर आई वर्क्स. यू सी जो इमेज बनती है रेटिना पे वो कैसे बनती है पता है आपको? वो बनती है ऐसी उल्टी. यू कैन सी इन्वर्टेड. जिराफ है, जिराफ की एक्चुअली द आई इज जस्ट लाइक अ कैमरा. ओके, तो जो इमेज है वो यू सी उल्टी इमेज पड़ी है, दैट इज जस्ट इन्वर्टेड. इमेज तो उल्टी बनती है लेकिन क्योंकि वो हमें कौन बताता है? ब्रेन तो उसको प्रॉपर ही बताएगा. और दो इमेज इन्वर्टेड पड़ी है लेकिन ब्रेन विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. जो है वो है, सीधा तो सीधा. दैट दिस इज द वे. ओके, so the image formed on the retina is inverted, but because that information goes to brain, so the brain will interpret it and hence we see the image clearly. जो है वो we will see it erect. Okay, so this is how the eye works. Okay, then see this. Have you ever observed this? एक शीट पे एक साइड पे हमने एक केज ड्रॉ किया है, एक साइड में बर्ड ड्रॉ किया है, एंड व्हेन यू रोटेट इट you can see, you feel, जो इतना फास्ट रोटेट होता है, you feel that the bird is in the cage. So this is called persistence of vision. Actually what is persistence of vision? It is just जो हम जो देखते हैं ना उसकी इमेज हमारी ब्रेन में कुछ टाइम तक रहती है. कितना टाइम रहती है? 1/16 of a second. 1/16 of a second टाइम तक वो इमेज हमारी ब्रेन में रहती है. तो अगर हमने एक सेकेंड के अंदर 16 इमेजेस चेंज की ना, आर यू गेटिंग? इफ हमने 1 मिनट के अंदर 16 टाइम्स अगर कोई इमेज चेंज करते गए, हम लोग 16 इमेजेस देखे अलग अलग, तो वी सी इट एज अ मूविंग पिक्चर, वी सी इट एज अ वीडियो. ओके, तो दैट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन. ओके, तो हम जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं?
दैट इज़ नथिंग बट द वीडियो हाउ इट इज़ मेड, कि वो 1 मिनट में 24 इमेजेस फटाफट फटाफट हमारे सामने से जाती है एंड वी सी इट दैट इट इज़ मूविंग. See how nicely our eye works, and eyelid we have to control the क्या देखना है क्या नहीं देखना है and all to protect our eyes. You see this is persistence of vision. डायरी का पता होगा आपको, right? The fighting and all, right? So this is the persistence of vision. Okay. Then there might be some defects of vision. क्या होता है, कभी कभी हमको जो इमेज कोई पर्सन्स होता है उनको दूर का नहीं दिखता है, कोई पर्सन्स है उनको नज़दीक का नहीं दिखता है. तो the person who cannot see the distant object clearly, okay, those who cannot see the distant object, दूर का ऑब्जेक्ट बराबर नहीं देख सकते, तो that is myopia. And those people who cannot see the nearby objects clearly, they are suffering from hypermetropia. You don't have this in detail but depends. तो उसके लिए हम अलग अलग lenses use करेंगे and we will clear the defect. You have learnt about the lenses in previous standard. So lenses का हम use करेंगे the specs of course, and hence we can see the object very clearly. Lens क्या करेगा, उस defect को clear करेगा. Okay, so that can be these defects can be corrected by using suitable lenses. Okay, और कभी कभी old age people जो है वो भी नहीं देख सकते, so that is they may like आई लेंस जो होती है वो थोड़ी सी क्लाउडी हो जाती है. जो लेंस हमने देखी विच शुड बी ट्रांसपेरेंट ऑफ कोर्स, तो ही लाइट उसके थ्रू पास होगा. लेकिन कभी कभी दैट लाइक इन द ओल्ड एज पीपल इट ऑफन हैपन्स कि जो लेंस होती है इट बिकम्स क्लाउडी, क्लियर नहीं दिखता उनको, दे सी ब्लर, दे सी द थिंग्स ब्लर. सो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज कैटरैक्ट, and this can be corrected by removing the eye lens and replacing it with some other artificial lens. So these are about the defects of the vision. Okay, then we should take care of our eyes. Yes, because eyes are very delicate. So how can we take care of our eyes? If there is any problem with the eyes, you have to have the checkup and use suitable spectacles if it is needed. If you have specs, use it. Okay, then too little or too much light is very bad for eyes. तो light proper होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होगी तो भी it will irritate the eyes or it will damage your eyes. Then do not look at the sun or very bright light directly. Never. It may damage your eyes. If the dust particles they enter into your eye, you should not rub the eye. उसको wash करो clean water से. Do not rub your eyes ever. ठीक है? Then ऑलवेज रीड एट अ नॉर्मल, एकदम नज़दीक, कोई एकदम क्लोज पकड़ के रीड करता है, दूर तो नहीं, जनरली नज़दीक पकड़ के, बट नो वी शुड कीप इट एट 25 सेंटीमीटर. आइडियल डिस्टेंस है. कीप इफ यू वांट टू रीड समथिंग कीप इट एट 25 सेंटीमीटर, वेरी आइडियल डिस्टेंस. सो इट विल नॉट बी टू फार, इट विल नॉट बी टू नियर द आई. ओके, देन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, यू नो दैट कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, राइट? So you should have to take the food which is rich in vitamin A, which are good for the eyes. Okay, carrots, green leafy vegetables and all you can have. Then you see there are certain people, we are very very lucky that we have got all the organs, we have got all the organs in proper manner, but there are few people who cannot see, they are blind. They might be blind up to certain extent, 10%, 20%, 50%, some might be 100%. So of course, but they have to deal, वो बैठ नहीं सकते एक जगह, they have to deal with the everyday situation. So there is a Braille system for them. तो लुइस ब्रेल नाम के एक person was there, he found this Braille system. Braille system में क्या होता है, there are 63 डॉट के, there are various patterns, 63 patterns है. तो you see ABCD का दिया हुआ है. सो ABCD कैसे लिखते हैं, ABCD या 1 2 3, देर आर टू डॉट्स, वर्टिकली टू रोज है एंड हॉरिजेंटली देर आर 3. ओके, और ये 6 का होगा उसमें पैटर्न, एंड देन अकॉर्डिंग टू ABCD फ्यू डॉट्स आर रेज्ड अबाउ, वो थोड़े से ऊपर रेज होते हैं, सो दैट व्हेन दे मूव देयर हैंड थ्रू दैट द ब्लाइंड पीपल दे कैन फील दैट, दे कैन फील द डॉट्स एंड दे कैन रीड. सो दिस इज द ब्रेल सिस्टम एंड वी शुड actually show sympathy. They don't need sympathy actually, but we should take care of them, right? They are also part of the society and we can take care of them. We can help them whenever or wherever they need. So this is how the Braille system works. Okay, so and yes, we should of course take care of our eyes and take care of yourself as a whole.
So you all stay safe, stay home. Goodbye.